नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं लेटर वाइज एमएच अब्राहम्स के सारे टर्म्स को कवर करा रही हूँ। ये हमारा जो है वो पार्ट 21 है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिटरली ये एमएच अब्राहम्स की बुक से है। एंड आप लोग तो जानते ही होंगे कि एमएच अब्राहम्स कितनी इम्पोर्टेंट बुक है फॉर अ लिटरेचर स्टूडेंट, राइट। सो मैंने पहले कवर करा चुका है लेटर ए से लेकर क्यू के पहले तक, ठीक है। पी तक मैंने कवर करा दिया है, प्लीज जाके उसको देख लो। एंड अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म क्वेर थ्योरी इन 1991? सो हमारा करेक्ट आंसर है तेरेसा दी लॉरेंस। नेक्स्ट, in which decade did lesbian and gay studies begin as liberation movement? So 1960s is the correct answer. Which concept introduced by Adrian Rich in 1980 emphasizes the spectrum of love and bonding among women? Lesbian continuum. Okay, next. Which theorist's work is often cited in arguments against essentialism, particularly the essay "One is not born a woman"? So, Monique Wittig. Okay, here is the correct answer, B. So, next question is, what is the main argument of Michael Foucault's first volume of History of Sexuality regarding the construction of the homosexual identity? So option number B is correct. Homosexuality was constructed by a medical and a legal discourse in the late 19th century. So yeah, here it is the correct answer. Judith Butler's concept of gender performativity suggests that gender and sexuality are performative acts produced by cultural discourse. Right. Next, what theoretical approach aims to deconstruct binary opposition such as male, female and heterosexual, homosexual? So हमारा correct answer है deconstruction, ठीक है। Which of the following is not listed as a key or anthology in the study of queer theory? The correct answer is option number C, The Second Sex by Simone de Beauvoir, who authored Epistemology of the Closest and contributed significantly to queer theory. So Eve Kosofsky-Sedgwick. What is the central concern of queer reading as an interpretive activity? To subvert and confound established verbal and cultural opposition. So here B is the correct answer. Which critique developed the phenomenological analysis of the reading process proposed by Roman Ingarden and applied it into individual works of literature? Wolfgang Iser. Okay, next. What term does Wolfgang to describe the reader who is established by a particular text as someone expected to respond in specific ways? The correct answer is implied reader. Okay, next. Which theorist's earlier work is effective stylistic focused on the reader's experience and claimed that meaning is derived from the temporal flow of reading? So Stanley Fish. ठीक है. What concept introduced by Stanley Fish suggested that a text meaning is created by strategies and assumptions shared by a group of readers? So हमारा correct answer है interpretive communities. Which type of criticism subverts structuralist view by proposing that texts generate innumerable mutually contradictory meanings?
deconstruction. Next, which book by Peter J. Rabinowitz examines how narrative conventions and politics influence readers' interpretation? So हमारा correct answer is C. Before reading, narrative conventions and the politics of interpretation. Right. Next, Judith Petrelli's work, the Resisting Reader, focus on what it expect of reader response criticism. Male biases affecting reader responses. Okay. Which critic argued that literary texts permit a varied range of possible meanings due to gaps or indeterminate elements they contain. So Wolfgang Iser is the correct one. Okay. Which of the following is not specifically associated with the reader response criticism? The anxiety of influence. Okay. Who is the author of the reader, the text, the poem, which focuses on the transactional theory of reading? Louis Rosenblatt. Which of the following author is not associated with the 19th century realistic movement? T.S. Eliot. ठीक है, ये नहीं जुड़े हुए थे इससे. Realistic fiction is opposed to romantic fiction because it represent life as it really is. क्योंकि realistic fiction जो है जैसा दिखाता है लाइफ को कि वो रियल में कैसी, और रोमांटिक फिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिसाइज कर देता है किसी भी चीज को. ठीक है, ये बहुत ही एक बेसिक सा फर्क है जो सबको पता होना चाहिए, एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. नेक्स्ट, which critic suggested that both the selection of subject matter and techniques in realistic novels depend on literary conventions and codes? Jonathan Fuller. Okay. Next, naturalism in literature is characterized by its focus on the philosophical thesis that humans are determined by heredity and environment. Who is credited with developing the theory of lay Roman experimental? Emily Zola. Which novel by Thomas Hardy is noted for its aspects of naturalism? Jude the Obscure. Reception theory proposed by Hans Robert Jauss focused primarily on the evolving responses of the general reading public over time. Hans Robert concept of the horizon expectation refers to the changing expectation of readers based on historical and cultural context. So हमारे यहाँ पे B is the correct answer. Okay. Next, which philosopher ideas about interpretation and hermeneutics influence Jauss reception theory? So Hans Georg Gadamer. Reception history as a mode of study transformed traditional literary history by narrating by cumulative interpretation and assessment of text over time. Which of the following is considered a key figure in the development of realism in American literature? William Dean Howells. ठीक है. नेक्स्ट देख लो. In naturalistic literature, characters are often depicted as being driven by heredity and environmental factors. Which author is known for incorporating naturalistic elements in their work, particularly focusing on the harsh realities of life? So, Emily Zola. What philosophical thesis underpins the naturalistic approach in literature? So, post-Darwinian biology and determinism. Reception theory focuses on the varying interpretation and evaluation of a text by readers over time. Who is the primary proponent of reception theory in literary criticism? Hans Robert Jauss. According to reception theory, the meaning and aesthetic qualities of a text are realized through the cumulative responses of reader over time.
Reception theory incorporates ideas which from other philosophical framework. Hermeneutics. A refrain in poetry is typically a line or group of lines repeated at regular intervals. In which of the following work is the refrain never more famously used? The Raven by Edgar Allan Poe. The refrain "Sweet Thames run softly till I end my song" appears in which Spencer's work? So Prothalamion बेसिकली यहाँ पे जो सारे वर्क्स है ये सारे के सारे यूजीसी नेट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजीसी जो है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछता है, सो प्लीज प्रिपेयर कर लेना. इसके जो पब्लिशिंग डेट्स है, कितने कैंटोज में लिखा गया है फेरी क्वीन और एलिजाबेथ को जो एलिगोरिकल फिगर है उसका क्या नाम है, तो ये सब चीज आप लोग को अच्छे से समझ लेनी है. रेड नाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ आप लोग एकदम अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये वर्क बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Which term is used to describe a refrain sung by all participants in a song? So here is the correct answer: chorus. The Renaissance is commonly said to have begun in which country? इटली. ठीक है. इटली में था, फिर फ्रांस में गया, फिर इंग्लैंड में गया रेनेसा. ठीक है. फ्रांस से फिर इंग्लैंड. ठीक है. चलिए. Who is often described as the last great Renaissance poet? जॉन मिल्टन. इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा. पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड पैराडाइज रीगेंड भी, दोनों का पब्लिशिंग डेट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये सब अच्छे से कर लेना. नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि एग्जाम इज वेरी नियर. The invention of printing from movable type is credited to. This is very important question. CVT में भी आ चुका है. जॉन गुटेनबर्ग. ओके. और इसका पब्लिश कब आया था वो वाला डेट कर लेना, एक बार देख लेना जाके. द कॉपरनिकन थ्योरी प्रपोज्ड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एमएच अब्राम्स पे दिया गया है तो इंपॉर्टेंट ही है, प्लीज इसको कर लेना. In Aristotle definitions, rhetoric is primarily concerned with discovering all the available means of persuasion in any given case. So B is the correct answer. Okay, next. Which of the following is not one of the three main classes of oratory identified by classical rhetorician? Expository. ठीक है, next. Who among the following defined rhetoric as the art of a good man, skilled in speaking? So Quintilian. This is also very very important question. Please note it down. The rhetorical device where the same word or phrase is repeated at the beginning of successive sentence or clauses is called anaphora. What is the primary focus? What is the primary focus of the rhetorical criticism as reviewed after the 1950s? Correct answer is C. Identifying and analyzing elements within work that are there to effect certain response in a reader. Wayne Booth's book, The Rhetoric Fiction, primarily deals with the rhetorical resource available to writers of fiction. A rhetorical figure where the abnormal order of words is reversed to achieve a particular effect is known as hyperbaton. ठीक है, next. According to the text, which of the following describe deliberative oratory? Option number B, persuades an audience to approve and disapprove of a matter of public policy. Which rhetorical device is characterized by the yoking together of different meaning of the same word in a single expression? So here is the correct answer is Yugma. The poem The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge is cited an example of the rhyme of which rhyme type? So here internal rhyme. ठीक है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर में इंटरनल राइम का यूज हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो प्लीज इसको कर लेना. Which of the following works is considered as an example of the Roman cliff genre? So Thomas Love
पिकॉक का नाइटमेयर एबे इज द एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म रोमांस नॉवेल इज यूजुअली अप्लाइड टू वर्क्स published since the decades of which decade? Actually it is 1950s, so your correct answer is C. Who among the following is not represented under the fictional name in Aldous Huxley's Point Counterpoint? So हमारा आंसर है सैमुअल रिचर्डसन। Which of the following novels focuses on the heroine and typically ends with the betrothal or marriage after overcoming obstacles? So जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये तो हम सबको पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन ऑस्टन भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। इनके वर्क्स के पब्लिशिंग डेट क्रोनोलॉजिकली उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following periodicals was begun in 2010 under and focuses on the scholarly investigation of Roman novels? So option number A, Journal of Popular Romances Studies. Madeleine de Scuderi, Lee Grand Cyrus is an example of which literary genre? So Roman Eclipse. Okay, अगर मैंने pronunciation गलत किया होगा तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which scholar wrote reading the romance, woman, patriarchy and popular literature? So Janice Radway. Which of the following is not a characteristic of the Roman Eclipse genre? The narrative focuses on the heroine's journey and ends happily. What is a common setting for the sale of modern Roman novels published by Harlequin Enterprise? So हमारा करेक्ट आंसर है सुपरमार्केट्स एंड न्यूज स्टैंड। सो यहाँ पे जो है वो हमारा लेटर आर एंड लेटर क्यू खत्म हो जाता है। लेटर क्यू में बस एक क्वेयर थ्योरी के बारे में एमएच अब्राहम्स में है, बस एक ही टर्म है इस पे एंड मैंने उसको कवर करा दिया। लेटर आर भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, जितने भी टर्म्स बन रहे थे उसको। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी लेटर एस के ऊपर, उससे जितने टर्म्स बन रहे होंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि मैंने जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 90% लोग तो यूं ही देख के बस स्किप कर देते हैं एंड बस 9% जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज मेरा आप लोग से अनुरोध है, सविनय निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं भी बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों के लिए बस बना रही हूँ, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड फायदा आप ही का होगा, क्योंकि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फोन में नोटिफाई कर दिया जाएगा, राइट। सो जितनी वीडियोस आएंगी सब की सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।